Welcome back, everyone. Good afternoon. So, we will be covering the very last part of the third unit, and with that, we'll be done with the revision. And I would like you to ask any doubts that you have after we're done. Shouldn't take long. And any doubts you have regarding any unit, I will answer them. So, if you have any doubts, be ready with them. And we'll be moving on to the very last part of the last unit, which is about natural disasters and dealing with natural disasters. So, in the last lecture, अभी जो हुआ था 1 बजे, उसमें भी डिस्कस्ड अबाउट कि ह्यूमंस का क्या इम्पैक्ट होता है एनवायरनमेंट का क्या इम्पैक्ट होता है ह्यूमंस पे, प्रो इन्वायरमेंटल स्ट्रैटेजीज कैसे बना सकते हैं यूजिंग अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी. We went through all of that, and as a continuation of that, on environment and human interaction, we will be studying natural disasters and उनको डील कैसे करते हैं and ASP के थ्रू कैसे डील करते हैं. That would be the major chunk. So to start with, what are natural disasters? I'm pretty sure आप सबको ही पता होगा नेचुरल डिजास्टर्स क्या होते हैं. एनवायरमेंटल साइंस में हम काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं. Still, just to briefly go over it, natural disasters are events that occur naturally and इनके through loss of life and loss of property, destruction, all of these things happen. There are multiple types of natural disasters. Geographical होते हैं, which are basically your volcanoes, tornadoes, tsunami, thunderstorms, all of those things. And meteorological are basically जो म्यूटेरॉइड्स जो बाहर स्पेस से एंटर करते हैं अर्थ पे एंड उनके इम्पैक्ट से जो जनरेट होता है, दैट इज meteorological. And then there are other types which can be man-made man-made forest fires and man-made flooding through dams वगैरह. That also comes under natural disasters. Now, even though these natural disasters occur naturally, humans के action का भी कहीं ना कहीं impact होता है in making them more common, in making them more harsher. For example, जैसे यहाँ पे mentioned है, deforestation के through, over exploitation of natural landscape के through, global warming के through, we can actually increase the occurrence of these natural disasters. For example, over exploitation of groundwater और mining की वजह से earthquakes का frequency बढ़ जाता है. So it has an indirect impact on those. So somewhere natural disasters can also be influenced by human actions. And इनका impact study करना जरूरी इसलिए है कि in majority of the world, in fact, हमारा infrastructure, हमारा building, हमारा organization are usually not built according to natural disaster से कैसे deal करेंगे, क्योंकि मे बी उस जगह वहां पे नेचुरल डिजास्टर्स पहले इतने अकर नहीं करते थे, बट विथ क्लाइमेट चेंज, विथ डिफॉरेस्टेशन, विथ ग्लोबल वार्मिंग, natural disasters have become more common. And since ये जगह equipped नहीं है उनसे deal करने को इतनी जल्दी, तो there is widespread damage, there is widespread loss of life, there is widespread destruction of property. And since ये जगह यूज टू नहीं है, डेवलप नहीं है कि वो उनसे डील कर सकें डायरेक्टली, तो हमें रिजॉर्ट करना पड़ता है सर्टेन स्ट्रैटेजीज, सर्टेन अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी स्ट्रैटेजीज के थ्रू, जिससे हम इनका इम्पैक्ट अच्छे से स्टडी कर सकें, प्लस अच्छे से कंट्रोल करने में भी हेल्प सके. वी आर एबल टू हेल्प दीज पीपल हु आर स्टक इन दीज डिजास्टर्स या हु हैव फेस्ड लॉस इन डिजास्टर्स में, उनकी हेल्प कर सके. तो यहाँ पे एएसपी का रोल आता है नेचुरल डिजास्टर्स में. There are parts of the world such as Japan जहाँ पे earthquakes वगैरह बहुत common है, तो वहाँ पे they've come up with systems, buildings के materials ऐसे होंगे जो इतने भारी नहीं होंगे, या buildings इस तरीके से डिजाइन करी गई होंगी कि earthquake अगर जब आए तो the building doesn't shatter through या तुरंत नहीं गिर जाती है. Their students are trained
कि अगर अर्थक्वेक आया तो हमें क्या बिहेव करना है, हमें कहाँ पे जाके रिजॉर्ट लेना है, हमें कहाँ पे जाके छुपना है, हमें एक दूसरे की हेल्प कैसे करनी है. सो दे आर ट्रेन्ड इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बट majority of the world is not, so that is why the impact can also be felt more in these places. बाकी वन थिंग दैट हैपेंस कि जो ये प्लेसेस ज्यादा प्रिपेयर्ड होती हैं, who have dealt with natural disasters like earthquakes and tsunamis for a long while, हम उनसे भी सीखते हैं कि हम अपने मेथड्स कैसे बेस्ट कर सकते हैं. सो दैट्स अ ब्रीफ ऑन नेचुरल डिजास्टर्स, कैसे अकर होते हैं, उनका इम्पैक्ट क्या होता है. नाउ वी विल मूव ऑन टू डीलिंग विद नेचुरल डिजास्टर्स. So there are 4 strategies of dealing with natural disasters. सबसे पहली होती है preparedness, which we discussed as in the case of Japan. So preparedness basically involves getting ready for the potential disaster. आपको साइंटिफिक चीजों के थ्रू या साइंटिफिक प्रिडिक्शंस के थ्रू आपको पता होता है सम नेचुरल डिजास्टर्स आर प्रोन टू हैपन इन दिस एरिया, तो आप पहले ही से उनके लिए प्रिपेयर्ड होते हो. आप पहले ही से अपने इवैक्यूएशन प्लान्स, अपने सप्लाईज को स्टॉक करके रखना, अपने क्या कहते हैं कम्युनिटी को पहले से बता के रखना कि अगर ये सिनेरियो हुआ तो आपको इस एरिया में जाके छुपना है, इस बंकर में जाके यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ. And all of those things are part of preparedness. And preparedness is an ongoing process. ये कभी रुकती नहीं है because natural disasters are unpredictable. तो preparedness हमें पूरे टाइम रखनी पड़ती है. Then we come to response. Response happens when the disaster has taken place. Right after the disaster take place, हम लोग we take immediate action towards it. हम उसकी तरफ respond करते हैं. And this response can be in the form of search missions, rescue missions, लोगों को एयरलिफ्ट करवाना उस एरिया से, लोगों को ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करवाना, इवैक्यूएशन में हेल्प करना, उन्हें फूड प्रोवाइड करना, उन्हें शेल्टर देना, essential services such as first aid देना उनको, and all of these things come under response. Response is very focused and response is short term. ये हम नेचुरल डिजास्टर अकर हुआ है उसके तुरंत बाद ही हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. सो रिस्पॉन्स इज दैट स्ट्रैटेजी. रिस्पॉन्स के बाद आती है रिकवरी. वाइल रिस्पॉन्स इज शॉर्ट, वो उतनी ही देर, जब जैसे ही डिजास्टर हुआ है वो उतनी ही देर होगा रिस्पॉन्स, थोड़े टाइम के लिए. बट उसके बाद जो प्रोसेस होती है पूरी, दैट इज नोन एज रिकवरी. इट इज लॉन्ग टर्म एंड इट फोकसेस ऑन कि जो कम्युनिटी के नॉर्मल फंक्शनिंग थी वो हम रिस्टोर कैसे करें, हम उसको वापस नॉर्मल पे ले जाने का कैसे प्रयास करें. तो दैट इज रिकवरी. इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ थिंग्स. इट कैन बी कि हम बिल्डिंग्स दोबारा रीबिल्ड करते हैं, हम डिब्री हटाते हैं, हम जो भी सोशल स्ट्रक्चर था उसे दोबारा, लोगों के जो भी ग्रुप्स थे, सोशल स्ट्रक्चर था, फैमिली से उनको साथ में मिलवाना, उनको इकट्ठा करना, ट्राइंग टू मेक देम कॉन्टैक्ट ईच अदर, दैट इज अ पार्ट. And we also help them restart their jobs, restart schools, restart their businesses. तो एक कम्युनिटी को उसके नॉर्मल फंक्शनिंग तक पहुंचाने का काम जो होता है राइट आफ्टर रिस्पॉन्स टू द इमीडिएट डिजास्टर अप टिल उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग तक, दैट इज नोन एज रिकवरी. रिकवरी कैन बी अ रियली लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी डिपेंडिंग ऑन डिजास्टर का इम्पैक्ट कितना था, कितना लॉस हुआ था और क्या क्या चीजें रीबिल्ड करने में टाइम लगता है. तो रिकवरी कैन टेक अप टू मंथ्स और इवन years. So response is short and focused. It might last for a week or two, maybe even days, depending on the extent of the natural disaster. And recovery is long term. It usually lasts months or even years. So ये हमारी तीसरी स्ट्रैटेजी होती है फॉर डीलिंग विद नेचुरल डिजास्टर्स. देन आवर लास्ट स्ट्रैटेजी इज मिटिगेशन. मिटिगेशन में हम बेसिकली ये देखते हैं कि डिजास्टर तो हो गया था, उसका इम्पैक्ट किन चीजों में सबसे ज्यादा था एंड उससे जो हमें नॉलेज मिलती है बेसिकली हम उसको अपने प्रिपेयर्डनेस को बेटर करने में लगाते हैं. सो जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं, कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ था तो फ्यूचर में उसका इम्पैक्ट कम करने के लिए वीक पॉइंट्स पे फोकस करेंगे. सो दीज वीक पॉइंट्स कुड बी कि
फ्लडिंग से हमें प्रोटेक्शन चाहिए तो हम सी वॉल्स बनाते हैं, हमें ऐसा जो बैंक है हमारे रिवर का या ओशन का, हम उसको इतने हाइट पे ले आते हैं कि फ्लडिंग होना थोड़ा मुश्किल हो जाए। एंड वैसे ही बिल्डिंग्स आर अ वीक पॉइंट, गिर जाते हैं अगर वो उस हिसाब से नहीं बने हो अर्थक्वेक को रेजिस्ट करने के लिए। So we focus on making buildings with earthquake resistant materials. We focus on making buildings reinforced with such structures जिसकी वजह से वो जल्दी गिरे नहीं और लोगों के लिए सेफ हो। So that's mitigation. So mitigation is in a way इवैल्यूएशन ऑफ की इम्पैक्ट सबसे ज्यादा कहाँ कहाँ था नेचुरल डिजास्टर का, एंड हम उसे बेटर करने के लिए क्या कर सकते हैं, एंड देन इट ऑल गोज बैक टू प्रिपेयर्डनेस। तो इट्स लाइक अ सिक्लिकल प्रोसेस। जब आपका नेचुरल डिजास्टर होता है आप उसके लिए प्रिपेयर्ड रहते हो, नेचुरल डिजास्टर हैपेंस, रिस्पॉन्स रिकवरी होता है, यू लर्न फ्रॉम व्हाट यू कैन मेक बेटर मिटिगेशन के थ्रू, एंड देन इट गोज बैक टू प्रिपेयर्डनेस वाला स्टेज वेयर यू आर प्रिपेयर्ड फॉर अ potential natural disaster in the future. So these are the basic strategies of natural disasters. And then we'll move on to role of applied social psychology in dealing with natural disasters. तो अभी हमने जो ये पढ़े थे ये general strategies होती हैं. Now we will be studying the specific strategies of applied social psychology से जो informed हैं. Just give me a minute. I'll resume. Just a minute. Sorry for the delay, everyone. Okay, so when we talk about role of applied social psychology in dealing with natural disasters, we tend to approach natural disasters with a people's first approach. Ki the people are the most important asset and the most important protectant in this disaster जो भी हुआ है हमारे पास। तो हम बाकी स्ट्रैटेजी से प्रॉपर्टी और इन सब चीजों पे भी फोकस डाल रहे हैं, बट व्हेन इट कम्स टू एएसपी we are solely focusing on loss of life, people's struggles, people inability to communicate, people's inability to process trauma. इन सब चीजों पे focus करते हैं. Through that we make strategies. So our first strategy through ASP is developing effective communication strategies. तो यहाँ पे जो हमारे psychologists और researchers will be on the field, will be on working with natural disaster वाले area. They will be concerned with making timely and accurate information for people जो उनके fears हो गए, उनके concerns हो गए, उनके problems हो गई जो उन्हें socially और personally face करनी पड़ रही हैं, उस पे focus करते हैं, and they try to help them make sense of everything and provide them with accurate information. And then we have community resilience. So applied social psychologists help in building community resilience. Since disaster hua hai, there must be loss of life and loss of property. People might not be near their family members. They might have got lost. They might have got stuck somewhere else, and all of this creates a lot of traumatic experiences with people. It creates a lot of fear. It creates a lot of uncertainty. So वो सब address करने के लिए applied social psychologists work on building community resilience through social cohesion and social support, community engagement. So they might conduct activities or they might try to redraw social boundaries so that people who are at least in one specific area or in one specific social region are able to exist socially एक साथ. They are able to give each other support. They are able to be there for each other.
एंड सोशल कोहेजन होगा, आइडेंटिफिकेशन स्ट्रांग भी विद योर सोशल ग्रुप, तो यू आर मोर लाइकली टू लुक आउट फॉर देम। कोऑपरेशन भी बढ़ती है इससे, इट मेक्स इट इजियर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, इट मेक्स इट इजियर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट एड, and it makes it easier for looking out for vulnerable people within the group. Since एक social cohesion होगा, you will feel social compassion for the members in your current group, so you're more likely to help them. So collective action and cooperation में help करता है. And then we come to psychological first aid. So जैसे मेडिकल फर्स्ट एड होती है, whenever someone's is injured, and the first aid, the medical first aid goes out and deals with the physiological symptoms. Applied social psychologists deal with the psychological symptoms that might be there. So यहाँ पे loss of emotional support, loss of social support, uh, inability to cope with trauma, inability to cope with the increased levels of stress, inability to communicate how they're feeling, how what they're going through effectively. इन सब चीजों को टारगेट करता है psychological first aid. The trained counselors, clinical psychologists, social workers provide psychological first aid to these people by giving them emotional support, by creating social support programs, by providing them with means to cope with trauma, showing them or communicating with them strategies that they can adopt to cope with stress, conduct de-stressing activities, conduct social mingling activities to help with all the stress and all the uncertainty that they're going through. And then we have evaluation and improvement of management programs. So these were all in a way response strategies थे हमारे, effective communication, community resilience and psychological first aid. Evaluation can be seen as similar to mitigation. तो यहाँ पे हमने impact देख लिया psychological इस natural disaster का. Now we evaluate the impact and we evaluate कि ये जो information थी, ये जो impact हमने देखा, हम इसको कैसे better employ कर सकते हैं, so we are able to deal with these natural disasters in the future. So this usually includes, as it is mentioned here, assessing emergency and routine plans, identifying barriers of effective response and recovery, and making changes to the overall quality of intervention strategies. तो जो भी हमारा intervention plan होता है, उसके सारे psychological parts हम target करते हैं to make it more better, to make it more responsive to people, to make it more responsive to their emotional needs. It might be कि किसी ने intervention plan बनाया है to help people who are dealing with who are going through house loss or property loss because of a tsunami. But उसमें psychologist अगर part नहीं थे, तो they might have not given emphasis on कि loss of property can also be very traumatic and almost have an equivalent impact on them as loss of life does, because you're losing your home, you're losing the place where you grew up, you're losing the place where you work. All of these can have a very dire impact on you, जो सिर्फ economic loss से beyond होता है. So अगर वहाँ पे psychologist नहीं थे present उस program को, उस intervention के बनाते समय, तो they might have missed on these things. But if a applied social psychologist is there, they would focus on these aspects very clearly. They would focus on कि emotional burdening and emotional loss कैसे feel होता है when you lose property. So all of these gets added into making better disaster management programs in the future. And lastly, we have understanding the psychological impact of disasters. So these are even more long-term these are even more long-term strategy of dealing with natural disasters. It usually focuses on research about the psychological impacts. तो इसमें ASP के researchers basically जो भी natural disaster हुआ है उसका impact के through they try to make models, theories and actionable plans on the effects of trauma कि और हमारे जो distress symptoms है वो develop कैसे होते हैं, वो दिखते कैसे हैं, वो हमारे social या emotional behavior को कैसे influence करते हैं,
एंड इट ऑल्सो स्टडीज लोगों का रिस्पॉन्स क्या होता है, ये जो भी उनके लाइफ में बड़ा चेंज आया है बिकॉज ऑफ नेचुरल डिजास्टर, उसको कैसे डील करते हैं. प्रोसेस ऑफ ग्रीविंग, लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ लव्ड वन से कैसे डील करते हैं. इट कुड बी अबाउट लॉस ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, लॉस ऑफ एजुकेशन, इन सब चीजों से कैसे डील कर रहे हैं. ये सारी चीजें अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी स्टडी. So this becomes part of the research body, and इनके findings are again used to make better disaster management programs in the future. So that is the major chunk. ये है role of ASP in dealing with natural disasters. And with that we are finished with the revision. ये हमारा लास्ट पार्ट ही था लास्ट यूनिट का, एंड विद दैट वी finished the entire revision of all the 3 units. I have been brief with a lot of things because limited time. So the remaining half hour is there for you to ask your questions. Uh, okay, it seems the chat might be turned off again. Let me see if I can fix that. Varna, there are very few people. You are very much welcome to open your mic and speak up. It's fine. आप हिंदी इंग्लिश जैसा भी क्वेश्चन है आपका आप पूछ लो. एंड किसी भी पुरानी यूनिट का है, इन तीनों यूनिट से कोई भी क्वेश्चन है, यू आर फ्री टू आस्क. आई ट्राई टू गेट द चैट वर्किंग. इन द मीन वाइल यू कैन ओपन अप योर माइक एंड आस्क मी. Hi everyone, the chat will be opened shortly. I talk to the team. So please be here. The chat will open shortly and then you can ask your questions if you have any. And yeah, feel free to ask whenever the chat opens. The chat is open. If you have any doubts, please feel free to type it there and I will address them.
Right, Divya. Okay, so I seem to have uh, downloaded the PPT in which I hadn't added the question for this lecture. It might be too. Anyways, I'll tell you what questions are important so you can note them down. So, सबसे पहले जो important question आता है इस chapter से is about on social dilemmas. तो वो तुमसे पूछेंगे social dilemma explain करो या social dilemma क्या होता है and discuss its different types. So you will obviously पहले define what is social dilemma and then you would discuss the three types: public goods dilemma, social traps, and then you will also discuss resource dilemma. I would suggest you to add examples यहाँ पे whenever you get the question. Adding examples, social dilemma में would be a really big push for your answer. So I would highly recommend you to think of some examples. कुछ examples तो जैसे यहाँ पे mentioned है resource dilemma के and public goods dilemma के मैंने discuss करे थे in the last class. So adding examples would be a good addition here, and this is a common question: social dilemma and types of social dilemmas. Then we also, the other important part of this chapter is the different strategies which can be used to protect the environment. तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको प्रो इन्वायरमेंट स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करना है. इट कुड बी आज डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं कि प्रो इन्वायरमेंटल स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं. इट कुड बी आस्क्ड इन द वे कि हम लोग एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किन स्ट्रेटजी से कर सकते हैं. सो इफ एनी वैरायटी ऑफ दिस क्वेश्चन किसी भी वेरिएशन में आता है तो यू हैव टू मेंशन प्रो एनवायरमेंटल स्ट्रेटजीज. So पहले you will tell you pro-environmental strategies are basically strategies which focus on changing a behavior so it can benefit the environment. Then you would discuss these 4 steps given by Steg and Black 2009 wala. The model we discussed, specific behavior choose करना, उसके primary factors देखना, then figuring out कि हमें antecedent strategies या consequent strategies से अपना intervention बनाना है. Then we have कि हम उस जो भी हमारा इंटरवेंशन था उसको इम्प्लीमेंट करके हमने इवेल्युएट किया एंड इवेल्युएशन के बाद जो हमें इंसाइट्स मिली, जो हमें लर्निंग मिली, उसको हमने अप्लाई करके एक और बेटर इंटरवेंशन बनाया. सो दैट वुड बी योर मॉडल एंड देन यू वुड डिस्कस सारे लो एंड हाई कॉम्बिनेशन है जो बेनिफिट्स और बैरियर्स के, द 4 of them that we discussed in the last class. यहाँ पे the important things you have to mention is clearly mention low benefit है कि high benefit है and similarly low barrier है कि high barrier है. Then you would focus on challenge क्या होता है intervention का main. All of the slides have mentioned it. So focus on that and then focus on the common ways of adopting this strategy. So इस वाले में social modeling था, इधर competition incentive थे. Similarly यहाँ पे make it easier commitment enhancing strategies हैं. तो read them thoroughly. उनके ये जो भी methods हैं, these are important. So when you are asked for types of pro-environmental strategies, the strategies of protecting the environment, this all you have to mention. And another question which can be asked कि how can social psychology be used to help people with natural disasters? अब यहाँ पे what you have to do, you have to describe natural disasters कैसे होते हैं, humans क्या impact होता है उनका, वो भी briefly mention करो. Talk about ये 4 major strategies होती है जिनके थ्रू हम डील करते हैं. Then talk about ये 5-6 जो हमने यहाँ पे ways लिखे हुए हैं, हम इनको यूज करते हैं ASP के अंडरस्टैंडिंग के थ्रू. ASP के रिसर्च और साइकोलॉजिस्ट ये यूज करते हैं टू डील विद नेचुरल डिजास्टर्स. तो ये 3 मेजर चंक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आ सकता है. इसके अलावा तो और है भी नहीं, like within this unit these are the 3 major topics. You have social dilemma, you have pro-environmental strategies and then you have natural disasters, उससे डील करने के तरीके. Dheeraj is asking glass ceiling effect with an example. Okay. So, going back to हमारा challenges to social diversity. We have glass ceiling effect.
So, glass ceiling effect basically is based on this assumption that when it comes to women and minority groups, we have a certain limit or certain threshold कि उन्हें कितना सक्सेस मिलना चाहिए, and people within the organization and organization के principles make it very difficult for women and minority groups to go beyond that threshold of achievement. So, for example, in a company, uh, there will be diverse groups working, but it might be the majority are men, maybe older men, and they might not be as likely to promote a woman or someone from a minority group to higher positions like a CEO or a CFO or a chairperson, because systematically and stemming from their own beliefs, it might be that they might not consider these people qualified enough to handle these roles. But these are all things which will be done implicitly, उनके खुद के beliefs से होंगे, उनके खुद के expectations से होंगे. It will not be mentioned somewhere कि हम ऐसा नहीं करते हैं, but it would happen कि वो ऐसा नहीं हो. And so glass ceiling effect is basically that within the organization and the majority group, there is an overall resistance, there is an overall unwillingness to let people of minority groups, who might be women, who might be some religious group के members, who might be some ethnic group के members या किसी state को belong करते होंगे, ऐसे लोगों को highly successful positions में पहुंचने ही नहीं देते हैं because of their own prejudice and stereotypes about these people. So that is glass ceiling effect basically. Um, Divya is asking, ma'am, there are two more questions, but how do you consider which? Okay, Divya, so the questions you have mentioned, उनमें short note आएगा possibly, and they are covered quite nicely in your SLM, and I have also mentioned them here. Culture and religion की जब हम बात करते हैं तो we talk about कि कुछ cultures के beliefs होते हैं अपने अपने about environment protection. For example, Masai of East Africa might believe in conservation बहुत ज़्यादा, and for opposite example में USA might not care about conservation, they might care of gaining as many resources as they can. So that is one example. And हमारे cultures, हमारा perception, हमारा view influence करते हैं towards environment conservation. And similarly, we talk about religion in a similar vein, कि कुछ religions talk about trees and forestation and forest in a very sacred sense. वो उनको अपने gods की तरह मानते हैं. They think of themselves as protectors of these things. And some religions might just not see it that way. So ये सब discuss करना है अगर culture environment पे है. It will be a short note, more or less. Long answer तो नहीं आएगा इस topic पे specifically. And human activities वाले में I have briefly touched upon it introduction में. We talk about all of these activities. All of these contribute to natural disasters. Plus, there were some points यहाँ पे भी कि we talk about deforestation, overexploitation, global warming. All of these are ways in which humans indulge in causing natural disasters. But keep in mind, सिर्फ human factors की वजह से natural disasters नहीं होते हैं. They also happen just because of environmental effects, because of how Earth works. Natural disasters have always been common, but humans can increase the frequency of natural disasters. So do mention also that in the answer. And these will be your short notes only. Dheeraj is asking why it's called glass ceiling effect. It's called, that's such a nice question, Dheeraj. It's called glass ceiling because it's invisible. Glass usually invisible होता है. So
इट्स इन अ वे यू कांट रियली सी इट बट इट्स देयर। तो जो ग्लास सीलिंग है वो देखने में शायद नहीं समझ आए बट वो एग्जिस्ट करती है। आप उसके बहुत पास जाओगे तो वो टूट के आप ही को हार्म करेगी, इसलिए हम उसे ग्लास सीलिंग कहते हैं। द रैशनल इज कि वो इनविजिबल है एंड इट विल हर्ट यू इफ यू ब्रेक इट। um okay, Divya, I'll answer your question first. Now, I haven't seen any such question जो impact of human health के बारे में बात करे, although syllabus में है, but read कर लेना, it never harms you to read upon it. So, and it is mentioned in your syllabus as well, so I would suggest you do read it. क्वेश्चंस में नहीं देखा है इज नॉट नेसेसरी कि आए ना, हो सकता है आपके सोशल नहीं, सॉरी, शॉर्ट नोट्स में आ जाए। ऐसे क्वेश्चंस यूजुअली कम इन शॉर्ट नोट्स, तो प्लीज डू रीड अबाउट इट। ऐसा मत करना कि पढ़ो ना आप। डू इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, अगर शॉर्ट नोट आया तो आपको क्या क्या लिखना होगा, तो डू मेंशन ऑल ऑफ दोस 5 पॉइंटर्स जो स्लाइड में मेंशन थे एंड गो थ्रू इट इन योर एसएलएम आल्सो, उसमें भी थे। Dheeraj is asking, women can't drive is an example of glass ceiling. Um, I think यहाँ पे it will be more of a stereotype कि women नहीं drive कर सकती हैं, and glass ceiling usually हम लोग जब बात करते हैं तो हम organization के sense में बात करते हैं कि for example there are 2 candidates who need to be promoted for the position of a regional manager. One is a man, maybe in his 50s, he and one is a woman who's also in her 50s, and दोनों के same credential हैं, दोनों का same experience है, दोनों accomplished हैं। तो यहाँ पे there will be some biases in the people deciding कि किसको promote करा जा रहा है, and it might be the woman might not get promoted. तो यहाँ पे ग्लास सीलिंग इफेक्ट हम कह सकते हैं एग्जिस्ट करता है, बिकॉज सिमिलर एक्सपीरियंस, सिमिलर क्रेडेंशियल, similar capacity to perform, but the woman does not get the preference because organization के अंदर और उसके members के अंदर bias और prejudice exist करती है। Women can't drive simply, I feel is more of a stereotype जो हम generalize करते हैं कि women can't drive या women can't drive well. It wouldn't be considered as a proper glass ceiling effect का example. You can write them as 2 different topics. Depends question क्या है तुम्हारा. Like SLM में I believe there is a question जिसमें conflict and conflict resolution अलग तरीके दोनों ही पूछे हैं. तो I would suggest वहाँ पे 2 अलग headings डाल के you mention them. You mention conflict कैसे होता है, कैसे originate होता है, उसके types क्या होते हैं, and then move on to conflict resolution क्या होता है और उसके strategies mention करो.
I have mentioned in साथ में ही because they're both a cause, they're both a challenge to social diversity, and I had to skim over topics इसलिए मैंने साथ में mention करा था. You can mention them both separately in your answer, depending question कैसा है. I but do make sure कि वो underline and highlight अच्छे से, मतलब उन दोनों को अलग अलग wherever you're mentioning, so the answer looks crisp. Yes, Dheeraj, that is a really good example that you've mentioned. It is a way in which women might not get promoted. Like some organizations might see it as कि women have pressures of family also. Women have the pressures of raising their children, taking care of their loved ones more than men have. तो उन्हें लगेगा कि वो जगल नहीं कर पाएंगे and they might not get promoted. So that is a good example. You can definitely use it. Of Divya, obviously Divya, you can shorten it, you can lengthen it, you can write it in your own language. It's all good. Just know कि जो major headings है वो cover करो. You can write it in your words definitely. But जो major pointers हैं, please try to cover them. उनके headings जो है उनको देख के समझ के देखो. And likewise you can add your own headings अगर तुम्हें जहाँ पे fit लगता है. जैसे हम रोल ऑफ एएसपी की बात करें, अगर तुम्हारे दिमाग में आते हैं कोई एक और इम्पैक्ट हो सकता है एएसपी का यहाँ पे, प्लीज फील फ्री टू मेंशन इट इन योर आंसर्स. बट डू रिमेम्बर कि ये जो यहाँ पे बेसिक पॉइंटर्स दिए हैं वो इंपॉर्टेंट हैं. डू नॉट मिस ऑन देम. यू कैन डेफिनेटली एड मोर एंड राइट इट इन योर लैंग्वेज. ओके सो हम बात करेंगे जब इम्पैक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट इन ह्यूमन हेल्थ एंड वेल बीइंग. तो क्रॉनिक इलनेस में we are basically talking about illnesses such as हार्ट डिसीजेस हो गई, हाइपरटेंशन हो गया, एंड देन वी हैव क्रॉनिक पेन के इलनेसेस होते हैं, लोगों के लिवर डिसफंक्शन होता है. बेसिकली इलनेसेस विच लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो ये जो लॉन्ग टाइम एंड थ्रू आउट लाइफ अगर इलनेस चल रहा है तो इट विल हैव अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इंडिविजुअल. वो अपनी लाइफ कैसे लीड करते हैं, उनके फैमिली मेंबर्स को भी अकोमोडेट करने होंगे उनके नीड्स. एंड इट ऑल्सो इफेक्ट्स देयर इन्वायरमेंट. इट इफेक्ट्स कि वो कहाँ पे पढ़ने जा सकते हैं या कहाँ पे रह सकते हैं, अकेले रह सकते हैं कि नहीं, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. So these all of these things tend to affect the person's quality of life.
affects their experiences, affects their normal day-to-day functioning. So that is how we understand chronic illness का impact on human health, along in conjunction with उनका environment. And जब हम बात करते हैं health disparity की, definitely we can also mention economical factors. That's a good point. Health disparity means कि basically inequality है in accessing healthcare, in gaining benefits from healthcare. So social, cultural, psychological factors plus economical factors भी exist करेंगे इसमें. You can definitely add it in your answer. I hope that answers your question. I am here for 5-7 minutes more, so please feel free to ask any more questions that you have. पहले वाले unit से भी I can answer इस वाले unit से भी. And then at 4:30 we will be concluding this session. So yeah, if you have any more questions, please ask them quickly. Yes, Divya. Short notes, तो I believe आप लोग के 5 marks के आते हैं in your exam. So short note can be from social dilemma, उसके types explain करना भी can be a short note. Then one short note that you might get is culture and environment का interplay या culture और religion का impact on environment. ये पूछ सकते हैं एक short note में. Then you can have impact of environment on human health and well-being. That can be a short note as well. Pro-environment strategies might not come in short notes because they're very extensive, but you should be prepared. Sometimes they ask very long topics. You just have to shorten them according to you and write them. Just make sure you mention all the headings. And dealing with natural disasters पे भी मुश्किल है short note आना, but it can definitely come. So just keep in mind जो shorter topics है वो तो short note के लिए आएंगे ही.
बाकी longer topics we might also come, so you would need to shorten them up. Focus on social dilemma, culture, environment, impact of environment on human health, and natural disasters for the short note. Unit 1 से, okay. हाँ, so Unit 1 से nature and purpose of ASP seems like short note आने की possibility बहुत होती है. And intervention evaluation में भी आ सकता है आपका short note. Participatory research methods are quite extensive, तो I don't think उससे short note ऐसे आना चाहिए जल्दी, although आ सकता है. And process of intervention में they might just ask you steps of intervention explain करने को briefly, so that can be short note friendly too. So focus on nature of applied social psychology and intervention evaluation for short notes from Unit 1. Okay, Dheeraj, I will go through your question and ask you. That is a very good point, Dheeraj. Um, Government के कुछ policies exist करते हैं, if I'm not mistaken, with people with chronic illness. But India में healthcare बहुत burdened होता है. The system is very burdened. Hospitals जितने हैं और doctors जितने हैं, उसके comparison में the number of patients, the number of people who need help, who need healthcare is quite large. I am sure some policies might exist, but ऐसे मुझे पर्सनली नहीं पता है. आई वुड हैव टू गेट बैक टू यू ऑन दिस. पॉलिसी बनाई तो इसी पर्पज से जाती है कि जब भी कोई डिजास्टर हो, जब भी कुछ हेल्प चाहिए हो, तो वो हेल्प कर सके. बट इट्स नॉट ऑलवेज इजी टू इम्प्लीमेंट देम इन अ कंट्री एज बिग एज इंडिया जहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज है. आई एम नॉट श्योर अबाउट और डिटेल्स. आई वुड लव टू रीड अपॉन इट एंड गेट बैक टू यू. सो अभी इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, होल्ड ऑन टू इट. अभी सिलेबस से इतना रिलेवेंट नहीं है, but it's a question you should maybe try to read up on more. I can also try to read up on more and get back to you. Okay, so thank you students for joining and those who have stuck around for clearing their doubts. It is 4:30 now. I will be concluding this class and I hope आपके जो भी doubts थे they have been cleared. So and please focus on अपना SLM और Schneider से भी दोनों से पढ़ने की कोशिश करना. And all the best for your internal assessment. I know वो आप तुरंत ही करोगे जाके. For internal assessment, focus on सारे in text question वाली जो exercises है SLM में. That will really help you क्योंकि वो fill in the blanks और MCQ के form में है. So they might give you an idea कि आपके internal assessment में क्या questions आएंगे. All the best. Thank you. Bye. Have a great day ahead.